It is secreted during the process of inflammation and during the process of the leukotrienes are also archidinic metabolized protein. और these also जो है वो secreted during the process of जो है वो inflammation and during the जो है वो blood जो है वो खून healing के जो है वो process में जो है ये भी chemical mediator का नाम. Then there is the neurocrine and the neural messenger. The neurocrine or the neural messenger are the neurotransmitter and neurohormone. The neurotransmitter is the endogenous signaling molecule that carries information from one nerve cell to the other nerve cell or muscle or another tissue. The example is the acetylcholine and dopamine. और न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो क्या हो रहे हैं कि नर्व्स की जो है वो एंडिंग के दरमियान में जो साइनेप्स होता है ये नर्व्स और मसल का जो साइनेप्स है उसके अंदर जो है वो सिक्रीट हो रहे होते हैं और इसकी एग्जांपल जो है वो एसिटाइलकोलिन और डोपामिन की. उसके बाद न्यूरल हार्मोन अब इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज रिलीज्ड बाय द नर्व सेल directly into the blood and transport to the distant target cell. And the examples are the oxytocin and antidiuretic hormone and hypothalamic releasing hormone. Then there is endocrine glands. We already discussed endocrine glands are the glands which synthesize and release the classical hormone into the blood. And what type of classical hormone? The chemical messengers. जिसको हमने पहले ऑलरेडी जो है वो डिस्कस किया है हार्मोन की डेफिनेशन को कि वो केमिकल मैसेंजर जो सिक्रीट होती हैं ब्लड के अंदर और ब्लड के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन में जो है वो पहुंचते हैं. तो एंडोक्राइन ग्लैंड आर बेसिकली द स्पेशलाइज्ड ग्लैंड व्हिच सिंथेसाइज एंड रिलीज द हार्मोन इनटू द ब्लड. तो वो जो केमिकल मैसेंजर की हमने टाइप पढ़ी थी एंडोक्राइन केमिकल मैसेंजर वो जो है वो सिक्रीट हो रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से इनटू द ब्लड एंड रीच टू द टारगेट टिश्यू. And the endocrine gland are also known as the ductless gland. That these hormones are not secreted into the duct. Like exocrine gland, if we see towards the exocrine gland secrete their secretion in the duct, while endocrine gland secrete their secretion directly into the blood. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो अपनी सिक्रीशन को डक्ट से जो है वो सिक्रीट कर रहे होते हैं और थ्रू डक्ट ये सिक्रीशन जो है वो थ्रू डक्ट जो है ये सिक्रीशन अपनी जो है लोकेशन पे जो है वो जहाँ पे उसने फंक्शन करना होता है वहाँ पे आ रही है. जैसे कि अगर हमारे माउथ के अंदर जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है जो कि पैरोटिड ग्लैंड की फॉर्म में पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, सबमेडुलरी ग्लैंड है. तो इन सब ग्लैंड की सिक्रीशन जो है these are exocrine gland और थ्रू स्पेशलाइज्ड डक्ट लाइक स्टेंसन डक्ट जो है वो पेल्विक ग्लैंड के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है. तो वो उन डक्ट के जरिए से जो है वो माउथ के अंदर उनकी ओपनिंग हो रही होती है और माउथ में उनसे क्या होती है वो सलाइवा का पार्ट बनती है उनकी सिक्रीशन. और जब वो सिक्रीशन जो है वो सलाइवा का पार्ट बन जाती है तो वो सलाइवा जो है वो हमारे माउथ के अंदर जैसे भी हम फूड लेते हैं उसको क्या होता है मिक्स करता है और उसकी मिक्सिंग के बाद जो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है उसकी जो है वो डाइजेशन करता है. So we were discussing basically the difference between the exocrine and the endocrine glands, and the exocrine glands secrete their secretion in the duct, and the endocrine glands secrete their secretion into directly into the blood. And we can also say here the endocrine gland के जितने भी सेल्स हैं उनको जो है वो क्या कर रही हैं ब्लड वेसल्स जो है उनको ब्लड वेसल्स में जो है वो सर्कल किया हुआ है सो दैट जैसे ही सेल से सिक्रीशन जो है वो सिक्रेट होंगी वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर क्या कर देंगे डिफ्यूज कर देंगे. Endocrine gland is further divided into the central gland and the peripheral gland. In the central gland, there are hypothalamus, pituitary, pineal gland, and in the peripheral gland, there is thyroid, parathyroid, adrenal, gland, pancreas, thymus. These are basically the peripheral gland because they are present away from the main जो है वो body, I mean head, away from the head.
And a central gland is also the central gland, hypothalamus, pituitary, pineal, because these glands also control the secretion of the other peripheral glands. And these central gland, hypothalamus, pituitary, are the main gland of the body. You can see here there is the hypothalamus and there is pituitary. These are the central gland. And then there is the thyroid, parathyroid, thymus, adrenal, pancreas, gonadal gland is also present in the form of ovary and testes. And then the hormone it is secreted by the major endocrine gland is hypothalamus. Hypothalamus is basically located in the brain just below the thalamus. You will see in the diagram there is forebrain, midbrain, and the hindbrain. And the forebrain is made up of the cerebrum, thalamus, and hypothalamus. And the hypothalamus has both function and neural and endocrine function. Hypothalamus has the both neural and the endocrine function. The releasing and the inhibitory hormone is secreted by the hypothalamus. That means hypothalamus secretes that type of hormone that act on another gland and secrete their secretion. That type of secretion of the hypothalamus will be the releasing hormone and inhibitory hormone. Hypothalamus also secretes some type of secretion which inhibits the secretion of another gland. These type of secretion will be the inhibitory hormone secretion. In next slide, or when we discuss the hypothalamus and interior pituitary gland, we discuss these hormones in detail. Here we only see the hypothalamus secretes the releasing and inhibitory hormones which are secreted by the hypothalamus. After that, there is pituitary gland. Pituitary gland is located in the brain at the end of the stalk from the hypothalamus. हाइपोथैलेमस के एंडिंग स्टॉप के ऊपर जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है. अब पिट्यूटरी ग्लैंड को हम फर्दर टू ग्लैंड्स में जो है वो डिवाइड करते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. Then anterior pituitary has different type of secretion and the posterior pituitary has a different type of secretion. When we study pituitary gland in detail, we will study thoroughly the different type of secretions and function. Here we only discuss that the pituitary gland secretes what type of hormone. Growth hormone, thyroid stimulating hormone. Growth hormone will increase growth of the body. Thyroid stimulating hormone will act on the thyroid gland and secrete their secretions. And adrenocorticotropic hormone which acts on the adrenal gland and secrete their secretions and act on the adrenal gland and stimulate their secretion. And then there is follicle stimulating hormone that will act on the follicle, that will act on the follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, and prolactin hormone with a gonadotropic hormone. We can also say it as these hormones. The follicle stimulating hormone displays the production of ovum and sperm, and the luteinizing hormone will perform their function also in the ejaculation of the ova and sperm, and prolactin will perform in the mutual ejaculation. Antidiuretic hormone and oxytocin hormone is secreted from the posterior pituitary. Basically, these are neurohormones. These are produced by the hypothalamus, but they are stored in the posterior pituitary, and on demand these are secreted on the body. And antidiuretic hormone will act on the kidney and perform the water retention. So we see here the chemical nature of these. The chemical nature of each hormone is also very important. Chemical nature of the hormones that are secreted by the posterior pituitary.
इंटीरियर प्रोटीन डाइट। किसी भी हार्मोन की जो केमिकल नेचर है वो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो उसी से ही रिलेट कर रहा होता है। जो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स है वो हार्मोन्स के अंदर हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे कि हार्मोन्स जो है हम यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जो हार्मोन्स होते हैं उनके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग जो है वो स्टेरॉइड के होते हैं, टायरोसिन टाइप के होते हैं और प्रोटीन टाइप के होते हैं। ये 3 टाइप जो है वो इनकी होती हैं और ये 3 टाइप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस लिहाज से होती हैं कि जितने भी प्रोटीन टाइप के हार्मोन्स हैं उनके जो रिसेप्टर्स हैं, उनके ग्लैंड हैं, उनके जितने भी सेल्स हैं जहाँ पे जाके उनके टारगेट सेल है जहाँ पे जाके उन्हें एक्ट करना है और उनको आगे जो है वो फंक्शन परफॉर्म करवाने हैं। तो उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मेनली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं प्रोटीन टाइप के जो है हार्मोन, तो उनके जितने भी रिसेप्टर्स हैं प्रोटीन टाइप के दे विल प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। और जितने भी स्टेरॉइड और टायरोसिन नेचर के जितने भी हार्मोन्स हैं उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल की न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसी